Sainik School. If Acha. Okay, hello. Uh, there was some audio issue. Okay, we'll begin again. So, good morning, everyone. Good morning to the students from Sainik School Ghodakhal who are joining online. And before we begin, I would just request Joshi ji from Sainik School either to just tell us that you are able to hear us, or just type in the chat so that we know that you are able to hear us clearly and you are able to see the slides and the display as well. So either in chat or just unmute and let us know. From Sainik School Ghodakhal, we can hear you. Thank you. Please proceed. Okay, thank you. Thank you for the confirmation. So what we have is that I'll very briefly tell about what is this National Space Day, and then we'll begin the two talks. So as you know that 23rd August is the National Space Day. This is the first ever National Space Day, and it is celebrated because last year on 23rd August, India made a history. ISRO made a history and made us proud. The Vikram lander, which was part of the Chandrayaan-3 mission, it successfully landed on the surface of the moon in the southern polar region. And that's when the Honorable Prime Minister declared that henceforth, 23rd August will be celebrated as National Space Day. So as part of this, we have organized many activities in many different schools. We went and spoke about different topics in astronomy and space sciences. Today, I have two of my senior colleagues who will be talking about AstroSat, which is India's first space observatory, and then a general topic, which is astronomy and curiosity. Before we do that, I have a very short video, which is a message by ISRO chairman, which we will show you before we proceed. Screen share. तेईस अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। India is on the moon. On 23rd August 2023, Chandrayaan-3 made the historic landing on the moon. The Vikram as well as the Pragyan made history. This 23rd August 2024, we are celebrating the National Space Day announced by our Honorable Prime Minister to commemorate the landing on the moon, the historic landing on the moon. Celebrations across the country are organized, culminating in तेईस अगस्त को Okay, so this was just a teaser for the National Space Day videos by ISRO. There are more videos which will follow after the
after the talk sessions. We have the talks now, and the first talk will be by Dr. Suvendu Rakshit. He's a scientist at Ares. He is a special expert. He specializes in active galactic nuclei. These are very massive galaxies where there are supermassive black holes which are eating up a lot of matter. And he's also in charge of one of our most important instruments on our biggest telescope. Now, there is also a tiny announcement to make, is that pay attention during these talks, during the videos and the posters that you'll see outside, because at the end, we'll conduct a on-the-spot quiz. And if you know the answers, correct answer to those quiz based on these things, you'll get some goodies. Okay. So Suvendu did his PhD in France. And then he had postdoctoral stints in South Korea, in Finland, in India as well, before he joined Ares. And yeah, so he has been here for the last nearly 4 years. And his topic is astronomy and curiosity. Over to you, Suvendu. Yeah, am I audible clearly? Yeah. So good morning, everyone. So we are here to celebrate kind of National Space Day, and this is the first time we are celebrating here due to the successful landing of on Moon by Chandrayaan-3. So in this talk, I will just briefly summarize what has been in the past and what we are doing now, what is our current understanding, just briefly, not to go into detail. So how the astronomy things evolved over time, right? So astronomy is a vast subject. It's one of the oldest science. So it's all started from the curiosity, right? And the curiosity provided us new discoveries. So we eventually discovered many, many things by our only curiosity, right? So yeah, so as I said, all started from curiosity, right? So humans has tendency to look around, right? We are also looking around everywhere and trying to guess what is going on. So previous time also, the ancient time also, if you go much back in time, our ancestor also looked at the sky and they saw different kind of objects in the sky. Some were fixed, some were kind of moving. So they thought, okay, some of the size are bigger, some of the smaller, different kind of celestial objects. So they tried to, for their survival, they tried to guess what are these objects, and they tried to infer some important aspect from those objects, those motions of these objects. So you can see the moon, you can see the sun throughout the sky, I mean, every day almost. So how they used that? So we know that lunar calendar, almost our Hindu calendar, Chinese calendar, all are based on lunar calendar. So they observed the shape, the change in the shape of the moon over the time, over the duration of month. And as you see that they changes over the time. So based on this moon phase, what we call now phase, based on that phase, we see that moon, the new calendar was developed. So to keep the track of the time over the year, they used the moon-based calendar, or just by observing the moon shape. The time, this leads to also to measuring the time. So how they did? They saw that sun is appearing from east and going to west. So you see, if you put a stick and you can measure the direction or the length of the shadow that the stick will make. So for example, if you put a stick here and the sun process, so it goes from this to this, you will see the
shadow time, this at a given time, the length of the shadow is changing also, right? So it also allows us in how kind of solar clock they predicted. So we also know that thanks to the astronomy, we know that Earth is tilted around 23.5 degree, and this leads to different kind of season that we are seeing. So as you see that Earth is orbiting around the sun and its tilt is around 23.5 degree, and because of that, in northern hemisphere you see summer during June, July, and winter in the December. This is opposite in the southern hemisphere, right? So this is because of the tilt that you see. So sunlight, you are getting more sunlight during one time, and we got less sunlight around sun. So, but if you are here, some place, let's say around the pole, okay, and we know that due to this nature, in the summertime, you will see sun throughout the day, right? This is, you know, you have read this, that if you go to the pole around 60 degree, then in the summertime, you will see the sun is never setting, right? And in the winter time, it's opposite. You will see the entire night is kind of dark. So if you go up to above 60 degree or above close to the pole, then you will see this effect. So thanks to this motion, the observation of motions and observations of these astronomical things, we have we are using these fundamentally the season change, time measurements, everything, right? Then if you go to historically also people used to travel, okay, so and you have sometimes tides, and due to the tides you have a water level rise in the ocean, right? And this leads to a huge problem for the sailor who sails for months and months. So and these tides, thanks to its astronomy, that we know that how the tides occur, right? So you guys also are familiar with probably. So now we see sometime around the frequency of this tide, if you consider it is 24 hours, we see 2 low tides, 2 high tides every lunar day. So low tides occurs in this bulge and high tides in this bulge when moon gravitational field is stronger. So let's say sun is here and the moon is orbiting around the earth, okay? So you see due to sun gravitational potential, sun is trying to pull it here, and then moon also trying to pull some of the material. So because of this gravitational pull, you see the tides occurring twice, large tides. And previously we do not have the sophisticated things. We used to find something in the sky. We used pattern, like we are doing in the map. So if you have any map, what you do to search your location of your home, you will go probably look at the close to a mountain, somewhere in the hills, next to Delhi, or some pattern you try to see. Like if the home is in the coastal area, then you will try to see if there is a presence of coast or ocean or something like that. So every time we use maps to study our location, to find our locations. In the sky also, to navigate the positions, we use the locations. And based on these, we have a different constellations, right? So in the modern sky, you have 88 constellations. Some of the popular constellation, you know, this Orion, Betelgeuse, and these things, like. So these are very famous ones. And but these are very old. People are advancing since technology is improving. We are now using sophisticated techniques. So what are the roles of astronomy for these sophisticated techniques or measurements? We no longer use, so there are various, as I said, the curiosity give us different kind of discoveries, right? So it was meant for something else, but found something. So most of the discoveries is like that. You try to find something, but as a byproduct, you get something else, right? So astronomy is used nowadays in medical imaging. So this is very surprising.
for the people, but it still is getting used in medical imaging. What else? There's a ideal that was used. It was mainly developed for astronomy, but used for this General Motor Company, okay, for their crash testing. Other things, how astronomy contributed and how it is affecting day-to-day life. So this is gas chronometer that was actually used for Mars mission, but now it is being used to survey luggage bag. You have a gas chronometer to find the explosive and things like that. The most advanced example would be the GPS, right? Global Positioning System. So as I said previously that we have maps, we use map to find our locations. But nowadays, you guys are smarter than me. You guys will just put a coordinate and will share the live locations. Okay, this is my live location now. So each location has a coordinate, right? And these coordinates are now we have using Global Positioning System to find our coordinates, right? And these GPS usually actually use satellites for their main purpose. But if you see how the GPS is working, then you will see that there are like 295 defining sources, astronomical sources that was used to calibrate that or to find the accurate position of those satellites, because the satellite also need to calibrate where is the satellite located. You cannot go there and measure their position, right? So you have to measure their positions in the space. So how do you do that? You try to see background objects and see where is because you consider the background objects are fixed, not moving, and satellite is moving very, very faster. So you try to calibrate their positions or locate their positions. So by indirectly, GPS is using these astronomical celestial objects. You know the CCD. CCD is a charge coupled device. So what is CCD? Charge coupled device. You are using this smartphone, right? Everybody is using smartphone. When I was kid, I think I was mostly we are dealing with this photographic reel, right? And you guys must have not seen this reel. Anyone have seen this reel? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So you guys can show them also, the other people, okay? So this shows how the technology is changing abruptly, right? I mean, so photographic reel, which I have seen this in my school days. We struggle to take pictures, right? We have to pay a lot of money, and we have to say, okay, only one pose is allowed. We can allow only one pose. You cannot change your pose, then you have to pay extra money, right? Now you take your 100 GB cell phone memory, just filled it up only with your selfies, right? So we are using this charge coupled device to take the photographs, and these are used in all cameras, sophisticated cameras, digital cameras. And it was actually developed for astronomy purposes, to take celestial images, high sensitive images of low light conditions. So these are actually byproduct that are coming from this. Now, why we need to study astronomy is it comes from our survival, as our ancestor also used that for their survival kind of way, that they want to keep their time, they want to harvest, they want to sail. So their different purposes it was used. Now we are modern, we do not do this. Very less people do cultivations and things, but we have a weather forecast system. We know when this rain is coming. Every time my mobile is set, rain alert, rain alert, rain alert, right? So now the things is more complicated, and we want to go much, much beyond and study our universe also. So how we can use the modern technology to study our survival, or to stay, are we safe or not? So one is this picture is shown the sun. The sun is also in active state. It's flared. It's not a very quiet, not a sleeping state. So it has huge amount of energy. Sometimes it releases large amount of energy to the space.
And those energy means there are many particles that are electrons, they are accelerated to a high velocity. They travel through the interstellar, this medium, interplanetary medium. And we have the planets sitting here around this region. So here you see that Earth has a magnetic field. Some of this charged particle cannot directly go through this. Thanks God that we have this one, right? So this magnetic field is actually protecting us, and it allows us to travel. It allows us to travel this charged particle through the pole where this magnetic field is closing their loop. So it's a little bipolar, like it goes like this. So it only travels through loops, these poles, and because of that, you see the auroras in the northern part of northern North Pole. If you go to the close to North Pole, you see the auroras. Night sky is very colorful, like blue and red and these things. So now it is people, you can see the glow also from the northern Himalayas also. So now astronomy is also needed for our survival, right? So we believe that there was dinosaur era, and that era was kind of disappeared because or extinct due to asteroid effect, right? So this is one of the danger for us, that asteroid can hit us and similar event can happen, right? So because of that, we need to track the asteroids when they approach to us. So we need sophisticated telescope or system or technology to track the asteroids of sufficient size, right? Now this is just an example of an so here what you see is a lunar crater in Maharashtra. Okay, this is around 2 kilometers in size, but it is believed that a meteoroid hits around 0.5 million year before, and the size of the meteoroid was only 15 meters. So only 15-meter meteoroids can create a crater like this 2 kilometers in size. So this is huge, right? Now, it is not just a single time it happens. Every day, every time there is something is happening. If they're very small, then they will be burned by our atmosphere and they will be destroyed. But if they are significantly large in size, they can just penetrate through the atmosphere. Some part will be burned out, but some part will still live and they will hit us. Okay. So that's why we need astronomy for our survival, to track how the things are going on in the space. We are sending satellites day by day, like with Chandrayaan-3. Then there was a Mars mission. Everything is now India is participating in Gaganyaan astronaut missions also, right? So we need to track those debris. There are many things. So if you send many things in the space, then there will be a junk. Like in the road, every day we go, we see that there are cups and papers and dishes plates. All things are scattered, right? And you have to clean everything. So space also full of kacharas. So you have to clean those kacharas. Sometimes these kacharas can be bigger, okay? And that also affect the movement of our space program. So that's why it says how the space program is moving. Now, why astronomy? As I said, curiosity. Humans are curious. There are curiosity can be different ways. People are curious as, oh, what my friend is doing. That is different curiosity. Curiosity is that leads to discovery is, so everybody are nowadays, modern people, they do not, you can search in Google and you will see answers to the very simple questions. But obvious questions, when I was in child, I had also in the mind, in the school mostly, that how are we alone in the universe? That is the fundamental question people think. Are we alone? Not this 1.4 billion Indian or 2 billion or 3 billion world population I am talking about. Are we alone in the earth, or are there other things, alien or some other things that are there in the universe? How the universe formed?
I mean, we just appeared here, or how the universe formed? And what is the future of our universe? So these are the bigger questions that people are trying to understand using this knowledge that was given and carried out from the past, from the ancient time. It is being carried out and it's developing. So I'll just briefly tell about what our current understanding of the stars, planets, and cosmology. Not to go into detail, not to confuse you and to bore you about this movie. It's going. So you all know this, right? So we have a sun at the center. So sun is our only hope, our solar, the Surya Devata we sometimes say, but sun is the star, the closest one among which we are orbiting, right? So if you see the sun, and then there are many planets, 8 are shown here because Pluto is not no longer its planet now. So all the planets are getting their energy from the star, sun, right? And how they get their energy? How they get their energy? बोलो जोर से बोलो, कोई तुम्हें कुछ बोलेगा नहीं, बताओ. Photons. But how these photons are coming? So that's why I said, so just to say, so we say that the energy source, the strongest energy source in our the lab or nuclear reactions, what we happen? We have the nuclear reactors, right? Similarly, we have the nuclear fission. That is, you are burning hydrogen to helium. So you are converting. Okay, so let's go and say that hydrogen burning is taking place. So in the star, at the center, there is a hydrogen gas that is burnt out as helium, and then helium will burn out as a other material like carbon, then other things. So those actually these nuclear reactions that is occurring in the sun, that gives us the energy. Okay, similar way energy we are getting the nuclear fission, but nuclear fusion is the reaction. So all the planets are getting their energy from the nuclear fusion. Now, if you look at the composition of the star, so how the stars are made up, they are not very simple. So there are multiple layers, like we have a hidden layers also. We have a skin on the top, and then if you do an X-ray, what you will find, there are some skeleton movement like this, right? So this is the human life. Similarly, star is also like this. You have a lot of multiple layers. At the center, you have a core region, then you have a radiative, then convective, and there is a very large blobs of gas and plasma going on like this. Not like Earth's surface. Earth's surface is like a soil and things like that. There is no plasma. But sun surface, plasma is ejecting. Okay, so there are a lot of things are ejecting. So how these stars are formed? So stars like us, they are also they are of different types. Some are like old, some are younger, some are formed. So mostly they formed like we born also, like we from the mother's homes we come younger age, child, younger age, and then we go to our older age, and then we will die eventually. So stars has the similar fate, right? They born when there is a collapse of clouds and they form the star. Then the star will be so dense at the core that the nuclear fusion will start. And the nuclear fusion, when it will start, it will produce a lot of energy. The energy will see it from other places. And then there's a hydrogen gas. It will burn to helium and other things. At some time, hydrogen, helium, all things will left. I mean, there will be no more hydrogen or helium. And the star will again collapse. Okay. And then it will form maybe white dwarf, maybe black holes or other things, depending on the mass of this thing. Okay. So like us, some of them are like heavy, some of the thin, some of the normal, not so heavy, not so thin. Similarly, the stars are in different size. So you have a red dwarf stars, which are very tiny, in the mass is very small. Okay. You have solar mass stars, as I showed the sun. Sun you can see easily.
Then you have very big stars, which is, you see, greater than 5 solar mass. It's a red giant. It's a different phase also, you can say. And also blue supergiant. So they are just to show that their stars are also different as we are different. And the stars are located in a galaxy. So our galaxy is Milky Way. So where in this picture, if I don't show this, then do you know where it is located in the Milky Way? Anyone? So Milky Way is a spiral galaxy. Now I'll talk about what are the galaxies. Very briefly, okay. Now you have the stars that are formed. Stars are different type. The stars are located in a galaxy, and we are saying our galaxy is a Milky Way. The sun is located here in one of the spiral arms, very far from around 26,000 light years away from the center. The center is here. So light takes time from here to here is 26,000 years. Okay. So usko 365 say you can multiply, and then you can get the days, and then you multiply with 8,644 to get the seconds. So anyway, so you know light travel time. What is the light speed of the light? So you can see that how much light will take from here to here. So the distance is very huge, right? So, and we are here, okay? And we said the galaxies are like this. Our Milky Way is spiral. So you see the structure like a kind of, how to say, octopus. So you see the structure like this. There are arms kind of like this. Now, and the central black hole, which is known as Sagittarius A, supermassive black hole, in our closest supermassive black hole, is located here. Okay. So we are safe. We do not need to worry about now about this black hole will eat us. So that is fine for us. Now, if you look at the galaxies, they are also different kinds. Okay. So stars are different kinds. Now galaxies are different kinds. Planets are moving around the stars. Stars are moving in the spiral arm of the galaxy, and galaxies are also moving. Okay. So you see, this is the Hickson 44 kind of sky area, a region of sky. And if you zoom it with a big telescope, now we had a Hubble Space Telescope and JWST. You have a sophisticated telescope. You zoom in, you will see there are different kind of galaxies. So, for example, one is very nice, interesting. This is a spiral galaxy, similar to our Milky Way. You see the nice arms going on. By looking, it's very beautiful, right? You have, if you look the same galaxy like this, then you will have edge-on spiral galaxy. So this one like this. You have elliptical galaxy, which is it hidden somewhere here? I don't know. Or maybe, yeah, here. So this one, you see elliptical, it's like an ellipse. Nothing interesting, it's just a boring. But it's an elliptical galaxy. Okay. Then you have irregular. So what makes this, you see, it becomes what happened to this one. Someone is pulling from this side, someone is pulling from this side. Something is happening to this one. So these are irregular galaxies. Okay. So here galaxies are different kinds also. There are other categories also, but forget about this. Now, since the galaxies are moving, what is our understanding? So if the galaxies are moving, like if I am moving, I may collide with him, right? Or anyone, right? So galaxies are moving, and eventually they can collide also with each other. The time, how much time it takes to collide each other, that is very large, right? Because there is huge space. Space is very large. So, but the galaxies are colliding each other. And here you can see that a group of 5 galaxies, they are very close by and seems like they are kind of interacting. Okay. So, and I'll just flash this and will not go more in this talk. So what astronomy started in the ancient time, it's still going on. Our understanding is improving day by day. As much as the technological improvement is happening, we are gaining more and more knowledge. We are developing better civilizations. In the present time, if you look at the night sky, you will see you are here.
you will see many galaxies, many stars, many things. So this is, let's say, you are looking from this side, you will see many galaxies, time, and things like that. But this was not the case few billion years ago. If you go past in time, you will see there are some times where the galaxy started forming. There was no galaxies. Okay. So this time we said the first galaxy formation time is around a few million years. Before that, what happens? The stars started forming, which was, let's say, the galaxy didn't develop that much yet. So stars are forming in the scattered regions. And if you go back in time, our theory suggests that everything happens from an explosion called the Big Bang. So Big Bang explosion started, and the then from here we originated, and now we are here, and I am talking to you guys, and you guys are here also. So this is to say that as the stars are evolved from hydrogen, helium, carbon, everything. So if you look at the star, you will see multiple, there are different compositions of a star. If you cut me out and then do a chemical composition analysis, then you will see I have 65% oxygen and you have hydrogen something roughly. I'm not sure that how much oxygen I have, but 65% oxygen, then you have a hydrogen, then you have a calcium, then you have the teeth is made of calcium, then you have a magnesium, other elements also, right? So we can say that we are kind of stardust, right? So I will stop here, and if you have any questions, then please do not hesitate to ask. Thank you, Suvendu, for setting up the tone with this wonderful overview of astronomy and why it is important and why are we studying it at Aries and globally, why astronomers are doing it. So now we have little time for a few questions. I would request that Sainik School Ghodakhal students, either they can type their questions in chat, or they can just click on the raise hand option. We'll come back to you in a bit. First, we'll take the questions from the students in class over here. So if you have any questions about whatever Suvendu spoke about, you can just raise your hand. Yes. मॉर्निंग सर Yeah. सर हिंदी चलेगा हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने सन की लेयर्स देखी तो हमें पता कैसे चला कि सन में क्या क्या लेयर्स हैं Yeah, so these are not simple to answer these things. There are a lot of sophisticated models. We do, let's say, different kind of chemical analysis. Then there are models are developed over the times. There are Parker models, there was other models that was developed too. Yeah. These are all based on models that what we think like that way, there is something happens in the core and that will propagate, and at different layers what can happen, and eventually what can we see. So what we are seeing at the surface, or let's say above the surface, corona and other region, but then we can backtrack in the time and we can see that, okay, this is the composition. If this much photons arrive from the central region, how much time it will take to travel from center of the sun to the surface of the sun? Is it random walk? How much collisions will happen? Then is it which process? So these are all models that was developed over the time. It's not single shot. Maybe some model will change again depending on our understanding as it's improved. आपने अभी जो भी टॉक में सुना सुवेंदु से, ये भले आपको एक हाफ एन आवर में इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है, लेकिन ये शायद हंड्रेड्स ऑफ या शायद थाउजेंड्स ऑफ साइंटिस्ट का काम है जो उनको करने के लिए सालों लगे होंगे. तो आपने फ्यू थाउजेंड ईयर्स का काम एक्चुअली जस्ट एक 30 मिनट्स में सुना है. तो दिस इज व्हाई ये पूरा ही आपको एकदम ही ब्रॉड ओवरव्यू के तरीके से बताया जाता है. Started from the ancient time when the first slide shows that we are looking at the sky, someone, how human just evolved, right? So just okay. Next question. Questions, anyone? Okay. ठीक है, थोड़ा सा शायद encouragement की जरूरत है. Excuse me. Young, so you can ask any kind of questions.
And maybe online there's a जो question. क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को बाद में टेलीस्कोप का स्टिकर्स दिया जाएगा. There was an online question probably. We'll just take a few from the class first. Anyone? Yes. Good morning, sir. Good morning. You said that the galaxies collide. So what happened after the collision? So this is also active field of research. We think that two galaxies will collide, then it will make it a bigger galaxy. It's mostly the spiral galaxies will collapse. They are younger. So once the spiral galaxies collapse, they will make a elliptical kind of. Okay, and there will be leftover dwarf galaxies also if they are interacting. So it's not like direct collapse. Boom. It goes like it's kind of coming closer and moving away. So some of the material from this galaxy will be going to this galaxy, and the galaxies evolved. It started from spiral, and then it will be evolving to the elliptical, giant elliptical. So depending on the gas in the galaxy, that it will do this. So now galaxies host a black holes. So if you see two galaxies are merging, you can see two black holes binaries, black holes moving. You can see triple black holes. Then three galaxies merging, you can see signature of three black holes also. So it will make it. Yeah. They don't collide. I mean, they like- can collide. I mean, we don't know that how we expect that there is track, right? They can do this, but observationally you cannot find such an event because these are huge events, right? So I mean, everybody has an orbit. So this one has an orbit, this one has an orbit, and this orbit time scale is very long, billions of years. Okay, so if they want to collide, the chance of this collision is very small. Let's say universe is, we are saying 14 billion years, and we say galaxies are forming, let's say around 1 billion years before. And if the orbit itself is few million years, then there's chance of very less chance of this having the same collision, similar. But it can do. I mean, there's no one is stopping them to collide like this. Thank you, sir. No. When the galaxies do, they can collide. They actually do, but it's, as I said, that it depends on the orbit. So orbits are so long that the chance of this collision is very low. Only the extended part will maybe merge each other. So that's why the chance of this such collision. Yeah. What about the physical laws you are reading in your class 10th, 11th, 9th, Yeah. 10th, whatever your class have, they have to follow these So rules. starting from Newton laws, They have to Kepler follow that laws. laws. So these These laws are not violated. Yeah, so these laws are not violated. It can do in principle, but time scale of such events are very long, very, very long. Thank you, sir. Any more questions? Good morning, sir. Mm. I want to ask that what's in black hole that attracts other bodies towards it? Black hole attracts other bodies. So what's the means matter with black hole that it attracts other bodies towards it? The gravity, because everybody is attracting each other, right? So it has more gravitational force than our. So how you remember in the class, maybe I don't know. So you have this gravitational force equation, which is 2 GM by GMM by R square, right? GMM by R square. So mass of two bodies. So if one mass is very large, then in principle it should attract another mass. Mass has to be very, very large because to GMM by R square, and the G is the gravitational constant. The value is 10 to the minus 11. So to see the effect, you need a huge mass. The black hole or stars has also mass. The sun, planet, they are orbiting each other by the gravitational force. Now, if the mass is very large, let's say, so this body cannot stay in the stable orbit, right? It has to come closer. Okay. So mass is very large. The stars, let's say, for example, sun, it will not be a black hole, but let's say if the sun is heavier, it will collapse at a certain point with hydrogen. The gas is, there is no hydrogen gas to burn the fuel. It will collapse, and all the masses will be very in a small region. Okay, the mass is very large,
the second body is there, so it has a higher attraction, gmm by c square. Okay, the core mass is very large. So it only follows the gravitational laws, and you will have this attraction. The gas materials will come towards this only because of the gravity. So does sun also revolve? In the Or the galaxy itself, in the spiral galaxies, because in the it's not like this way, but it's moved. It moves from or drift from the arms. So the spiral arms are showing. It was like, you can say the galaxy has arms, as I said, right? Arms, it was like this. So galaxy arms is kind of traffic jam. Traffic jam is like when you have a car in front of you, all the car will be slow. Okay. And once the space is available, all the cars will go like faster, right? And once the traffic jam, you cross the traffic, then you will be again faster speed. So all the stars, they are in the galaxy, they are also drifting, not from the in that locations. Okay, but the drift speed is very small. I think in the slide, the drift speed is also written, but yeah, it's very small. Okay, maybe one last question. Can you tell me about Big Bang? Big Bang. So Big Bang is a kind of also it's a kind of model that was based on different kind of observations, like cosmic microwave background. So we see, we think the Big Bang is an explosion from where the universe started. So then to support this model, we had to consider the universe is expanding, because we see that universe kindly is expanding. So we think that universe should be in a contraction positions. Okay. Now there is a Big Bang nuclear synthesis. There are some other models depending on the presence of elements, lithium and other kind of elements. Okay. Then there are so mostly two methods we have. One is the Big Bang to explain the universe, and one is the steady state universe. So these are all based on the model. To simplify, I will just say that it was just exploded. Suddenly, there's a yeah. You want to say something? No, there's no matter. Matter is different thing. Matter has to be. Our understanding of Big Bang is that inflations, when there was an inflation period, then only you have a electron. Matter is what? Is composed of what? Matter composed of. So electron proton was not there at that time. So electrons, you have a gas. When there's a gas material, then you have a hydrogen atoms, and then you have electron protons. But before the inflation time, there was nothing like this. It's a kind of plasma soup kind of way. So, so it's still our knowledge is advancing. People will write something in Google. Someone will write something else. But overall understanding is that this is just based on a model which is supported by some theories, some observations, like cosmic microwave background has a temperature 2.7. Have you heard of the cosmic microwave background? Okay. So there's a faint. So as I said, if you look at this, probably I closed. So anyway, so if you look at this image, I said the galaxy is formed after a certain time, right? This is our kind of understanding. We don't know if there is a galaxy before that time also. So JWST, the Space Telescope, 6.5 meter Space Telescope, has launched last year, and it has found that more and more galaxies massive galaxies are formed earlier than thought. That is one. Now, before that, we cannot see what happened at the Big Bang time. The reason is that there is a complete dark age, we say. Dark age means the material is very much thick that the light cannot pass through. So whatever the light is there, that is as a kind of thin background radiations is called cosmic microwave backgrounds. I don't know how easier way to explain those things. Maybe So, I can just add a minor point to clear out a bit of a confusion. So this explosion is not a literal explosion like a bomb blast. Okay, ये ऐसा explosion नहीं है. The what Big Bang Suvendu just explained and what he was talking about, that inflation and the universe expanding. So it was the Big Bang was
the actual creation of the universe when the space itself was created. And that is expanding. And based on, as he said, that the observations indicate that in the past, everything would have started a point. So since everything started from a point, it is called as a Big Bang. And in fact, that name itself was given by a scientist who was actually opposing it, and he made it as a joke, that term. But that it just stuck. So it's not a literal explosion like a bomb blast. So Okay. there was the priest in Austria or somewhere, who just made a joke. What they are talking about? It's a kind of Big Bang or something. And that No. He was that this Fred Hoyle was the person who made the joke. yeah. Okay, British so guy. that guy actually thought that this is, so then it was adapted as a kind of Big Bang original models, and there are other models also. It is not the Big Bang is the original actual model. It can be different other models also. I mean, More observations, as he was pointing out, that indicate that Big Bang is probably the right currently the way. best That's suitable the best understanding. Western model that currently can explain most of the observable signatures. That is- Okay, now we'll quickly go on to the online participants, Sainik School Ghodakhal. If you have any question, you can unmute yourself and ask, or you can raise your hand so that we know that you want to ask some questions. Apart from the Milky Way galaxy, how do we get to know about the other galaxies? we can actually observe those galaxies. I mean, we can see by, for example, all the galaxies we can see. Milky Way is difficult to see because we are inside the Milky Way. We cannot image the whole Milky Way. Okay, because we are inside our home, so we cannot see what is going on outside, little bit there and there. So because in the same plane you are, so here now, but you can see from other planets or other galaxies also. For example, you are in the Earth, you cannot see the whole Earth, but you can see the Mars, Venus, the other planets, right? So similar way, you have these galaxies. You need a sophisticated, better telescope. For example, amateur telescope can also give you the other galaxies also, right? Andromeda and other close by galaxies, which are very bright and close by, that you can easily observe using a smaller telescope. If you want to know their detailed informations, you need higher sophisticated instruments like we have our telescope and space telescopes and ground-based telescopes, but larger size. But you can see, I mean, there are if you look at the night sky, you have different objects, right? Many of them are galaxies. Okay, any more questions from Sainik School? Maybe we can take one or two more. Good afternoon, sir. I'm Cadet Nikunj from Sainik School Ghodakhal, and my question is, a term solar mass was mentioned in one of the slide. What does it stand for? So solar mass has an unit. It's like 2 into 10 to the 30 kilogram. So this is the mass of the sun. So all the bodies are, many of the astronomical objects are very highly massive, right? So we express those masses in terms of solar mass, like 10 times solar mass, a million times solar mass, something like that. Okay. So solar mass is 10 to 2 into 10 to the 30 kilogram. This is the mass of the sun. Like we are 70, 60 kilos or 50 kilos, something like that. Okay, one last question from Sainik School before we proceed for the second talk. Thank you, sir. We are done. No more questions. Okay, thank you. Thank you, Suvendu, once again. And please, a round of applause for Suvendu for spending his busy time. Now I have our senior colleague, Dr. Jeevan Pandey. He is a senior scientist at ARIES and also the head of the astronomy division at ARIES. He's on the committees of many different telescopes, observing time. So it's not that one fine day you wake up and say, no, I want to observe from this telescope. No, you have to justify what scientific goals will come out of it. So he's there on many of such committees. And he will be talking about his PhDs from ARIES only, and he has been working here for, I guess, nearly 20 years. More than that, yeah. And so he will be talking about AstroSat. Nowadays, you hear everything about Chandrayaan, Aditya L1, but much before these missions, there was one mission
which probably did not gain much attention in media at that time because space, probably people were not that much interested as they are now. But you'll hear about this. This is a very, very massive achievement by India in the field of astronomy. So he will be talking about AstroSat, which is India's first space-based observatory. Just a moment. There is some issue. Yeah. No, ज़्यादा better है. Did you screen share किया आपने? Fine. Okay, thank you, Brain, and overview by the Vindu, and welcome you all here at Aries and online participants from the Sainik School. This is Suyalbadi, right? Yeah, this is from Suyalbadi. When I go to my home, it is on the way. Okay, fine. So my job is here to tell you about the AstroSat. That means a space day. So what is the AstroSat and how the satellite works? And why do we need it actually? So to do something is why do we need actually? So we'll start with that. Why do we need all these satellite, these junk things? Because they are making the junk in the space. So why do we need actually? I'll start with this, the electromagnetic spectrum. The light which is coming to us, for example, this light from the star, light from the sun, light from the moon, that we call the electromagnetic spectrum. Spectrum, you understand that? For example, in this room, you are the class 9th and onwards, let's say. So this is a spectrum of 9th to 12th class. And different age spectrum is there, right? Age, let's say 10 to 16 years spectrum is there. So when I say the spectrum of the electromagnetic, that is light, spectrum of the light, what does that mean? I am telling to the different energies of the lights. If you call the spectrum of the light, we can divide the light into different parts that it started from the gamma ray, then X-ray, then ultraviolet, then visible, then infrared, then far infrared, then going to the radio. I have drawn it here.
I've drawn it here. You just look into that according to the wavelength. Wavelength, there is a wave. The distance between troughs to troughs, crust to crust is called the wavelength, right? That we have already read it. So what is the wavelength here? This is this to this is the wavelength. So when I'll go from here to right to the left, you just look into that, the wavelength is changing, right? Starting to the gamma ray, the wavelength is a small, then X-ray is a more, then is a more. When going to the radio, it's the highest one. In the X-ray, that is, even if the gamma ray, it's let's say 0.01 angstrom. 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. It's too small. And when I'll go to the radio, it's around 10 to the power 3. It's too much, right? Just I mention it here. No, not working at all. Yeah, I mentioned the size. If I talk the gamma ray, the size of the atomic nuclei. Atomic nuclei means there is an atom. When you remove the electrons from the atom, there will be the nucleus only. When you talk about the X-ray, this is the atom, size of the atom. When you talk about the ultraviolet, size of the molecule. Molecules means when the atoms are joined, make one molecule. Then, if we talk about the visible wavelength, we have talked about the biology, that is the amoeba and protozoas are basically in that range. When you talk about the infrared, it's a needle. When you talk about the microwave, it's the size of the butterfly. And if you talk about the, let's say, to the millimeter wave, or centimeter wave, meter wave, that you talk about the human size, and more than that, the building size. So the stars, whatever are there, the system is that they emit in any one of these wavelength range. Maybe the energy in that wavelength range is too small, but somewhere is too high. So if the object in the sky are that much that they are emitting that much of the energy in that wavelength, then how to observe them? And whether all the radiation which are coming from the star, or whatever the object in the sky, are receivable at the Earth or not. The lower one is, okay, frequency, that is a number of oscillation, number of waves in per unit time. And this is a temperature. When you go from X-ray to the radio, the temperature decreases. Okay, so that you know that the fundamental things. Then if you go to this diagram, what it tells is that what kind of the radiation you can receive from the sky to our ground on the Earth. You will receive only very small fraction, that is called the optical wavelength, that you can see it. The small window. You just look into the small window. Infrared, because of the absorption, because of the water molecules in the sky, these are observed. And a small portion of the radio wavelength you can see because of the higher wavelength, it cannot be observed. When you go to the ultraviolet and X-ray, entire thing will be observed by the upper atmosphere. That's what our atmosphere saves us from the harmful radiations. The ozone layer, that probably you have been heard. The ozone layer protects us this. Good. Yeah. So if you see this, the sky, as Subhendu told that you saw the galaxies, Milky Way. Because you are in the Milky Way, we cannot observe the entire thing. I cannot see my back. So you are on the Milky Way. I cannot see, if I am inside the house, I cannot see outside my house. So the same thing in our galaxy.
I am on the earth, I cannot measure, I cannot take the picture of the entire earth, right? But I can take the picture of the sun, picture of the moon. Same thing, this is a picture of the center of the galaxy that we can see it. The center of the galaxy, when you will go to the southern direction in the sky, you will see the center of the galaxy. Even then you can see the, so when you told that the spiral arm of the galaxy, you can see this spiral arm in the sky. One arm will be seen in the summer, one arm will be seen in the winter. Just after when rain goes away, you just look into the sky, you will see into dark sky, you will see the cloud-like structure, in the sky. It's a patch of the sky. This is the one arm of our galaxy. Okay. If you see in the different wavelength, the center of galaxy, you look into that. So we need to be carefully inspect it. Is it okay? Shall I speak in? मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, चलेगा ना हिंदी में भी? ठीक है, फाइन. आप देखिए, starting from the gamma ray, X-ray, optical, near IR, mid IR, एक ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ that these are the wavelength. इनकी वेवलेंथ कितनी है, उसी के हिसाब से हम एनर्जी निकालेंगे. एनर्जी कैसे निकालते, फोटोन की एनर्जी कैसे निकालते हैं, पढ़ा है? निकालते हैं ना, h into nu, right? Planck constant multiplied by frequency, या hc upon lambda. तो हमारे पास सारी एनर्जी मिल जाएगी ना. यहाँ पे वेवलेंथ निकाल, लैम्डा जितना कम होगा उतना एनर्जी आपका ज्यादा रहेगा. तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगा, गामा रे में, और सबसे कम एनर्जी रेडियो. अब देखो डिफरेंट एनर्जी में मेजर किया गया है. वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, मैं टाइम मिलेगा तो आपको बताऊंगा कैसे करते हैं. अब आप देखिए इसको, केयरफुली देखिए इसको. हर एक एनर्जी बैंड में देखिए आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखते हैं. इस पर देखिए गामा रे, जो एक्सरे पर नहीं दिखता है. आप ऑप्टिकल में एकदम डार्क हो जाता, कुछ दिख ही नहीं रहा है. इसके माने जो रीजन जो वहां से ऑप्टिकल से इमिशन हो रहा है, कोई ना कोई उसको ब्लॉक कर रहा है. इसके माने यहाँ अगर ये वाला रीजन दिख रहा है, दैट मीन्स दिस रीजन इज हॉट, गर्म है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा है. तो क्या है, बहुत ज्यादा गर्म है. और ये वाला रीजन क्या है, थोड़ा सा एक्सरे में और कम है. नाउ यू कम टू द रेडियो. लेकिन कुछ रीजन देखो, यहाँ रेडियो में भी इमिशन है. कुछ रीजन ऐसा भी है वहां चारों तरफ जो ठंडा भी है. तो हम क्या कहने का मतलब है इसका, डिफरेंट एनर्जी बैंड में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं किसी को, तो हमें डिफरेंट चीजें दिखती है. आप लोगों ने कभी मेले में वो चश्मे मिलते हैं लाल हरे पीले नीले वाले, देखे? और उससे आसमान देखा कभी? आप देखिएगा कभी, भवाली में मेला लगता, कभी आइएगा, ठीक है? अब वो चश्मों को खरीदे, आखिर आपको डिफरेंट दिखता है. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हो सकता है आपको दिख नहीं रही हो, लेकिन उस चश्मे से आपको दिख जाती हैं. एक चश्मा मिलता है बाजार में कॉर्ड पोलरॉइड, अगर उससे आसमान देखेंगे तो डिफरेंट दिखेगा. तो इसका मतलब क्या है कि हम उस एनर्जी बैंड को, हम उस वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बाकी को हमने ब्लॉक कर दिया है, राइट? तो इसके मतलब कि हमें डिफरेंट एनर्जी बैंड को चाहिए हमें ऑब्जर्व करने के लिए, तब जाके हम उसके बारे में पता कर सकते हैं. अब ये सब तो हमें पता चल गया ऐसा हो रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए. पहली वाली स्लाइड में मैंने बताया कुछ चीज तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे. हमारे पास टेलीस्कोप है यहाँ पर, देवस्थल एक जगह हमारे पास मुक्तेश्वर के पास है. देन वी हैव आल्सो 3.6 मीटर टेलीस्कोप वी कैन डू. वो सिर्फ कौन से बैंड में करेगा, इस बैंड में. सिर्फ इतना छोटा सा रेंज, ऑप्टिकल में इतना छोटा सा रेंज करेगा. या ज्यादा से ज्यादा हम जाएंगे तो इंफ्रारेड रीजन यहाँ तक जाएंगे, कुछ यहाँ तक जाएंगे, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि आसमान ने वो लाइट हमको रोक दी है पूरी. तो फॉर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो बताएंगे भी. तो अगर हमारे पास नहीं, अब यहाँ से ऑब्जर्व नहीं किया तो कहाँ जाए, स्पेस में जाना पड़ेगा. यू हैव टू क्रॉस द स्पेस. So if you have to cross the space, then what you want to make? You want to make a satellite, spacecraft, satellites. तब हम आए बनाने के लिए एस्ट्रोसैट.
एस्ट्रोसैट मैंने लिखा उधर, फर्स्ट इंडियन मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी. So I have worked on this observatory. Still I am working on this observatory. Okay. Being in any another way. So this observatory consists several instruments. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स करती है. मल्टी वेवलेंथ है कहा ना मैंने. ऑप्टिकल तो हम ग्राउंड से कर ले रहे थे इसलिए हमने छोड़ दिया उसको, फिर भी हमारे पास है उधर. एक्सरे हम ग्राउंड से कर नहीं सकते बिल्कुल भी. रेडियो हम ग्राउंड से कर लेते हैं. रेडियो ऑब्जर्वेशन हम ग्राउंड से कर लेते हैं. हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप है इंडिया में. द फेमस वन इज अभी द रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर पुणे के द्वारा खोडाड में हमारे पास रेडियो टेलीस्कोप है. बाकी ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमारे पास नैनीताल में है इधर एक टेलीस्कोप. 3 टेलीस्कोप हमारे पास देवस्थल में है. अपार्ट फ्रॉम दैट एक टेलीस्कोप 2 टेलीस्कोप रन करती हैं. ले हैनले एक जगह है, हैनले ले से बहुत दूर है. द हाइट ऑफ दैट प्लेस इज अराउंड 4.5 किलोमीटर, 4500 मीटर. ओके, ऑन दैट प्लेस. अभी हम 2000 मीटर के आसपास है. And other telescope is in Kavalur, south, and there are many other telescopes, such as similar telescopes. Okay. Now coming to the astrosat. So do you know then why we need astrosat? Because the sky gives the observation different wavelength. तो मल्टी वेवलेंथ तो लेगा, लेकिन हम रेडियो में नहीं करेंगे, ऑप्टिकल में नहीं करेंगे. दैट व्हाट विल यू डू इट? हम करेंगे ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मैंने मार्क किए. ये इंस्ट्रूमेंट where is the UVIT? Not on the UVIT. Anyway, but यहाँ पर एक टेलीस्कोप है. This is, yeah. This is a UVIT, that is ultraviolet imaging telescope. Imaging कर रहा मतलब फोटो ले रहा है. SXT, this is a soft X-ray telescope which works around the 1 angstrom, around the 1 angstrom. This is the LAC species large area Zenon proportional counter. Proportional counter थोड़ा सा टफ है अभी आपके लिए. I'll come to that if is it possible, if you can understand. And CZTI cadmium zinc telluride imager. Cadmium भी है, जिंक भी है, telluride भी है. Okay, उससे बना हुआ imager है. And LAC species large area तो समझ में आता है. X मतलब Zenon. Zenon that is a inert gas है ना. तो इनर्ट गैस हमने क्यों यूज किया है? इनर्ट गैस क्या होता है? जो एक्टिव नहीं करती किसी के साथ. ओके, जब फोटोन आता है, फोटोन मतलब जब एक्सरे फोटोन आएगा, एक्सरे कभी ना कभी किसी को जरूरत पड़ी जाती है लेने की. आप लोगों ने लिया ना एक्सरे, राइट? तो हम लेबोरेटरी में एक्सरे प्रोड्यूस, तो जो होता है वो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं वहां पे. एक्सरे आपके बॉडी के थ्रू जाता है तो हमारी बॉडी को तो जो हमारा मसल्स है उसको तो क्रॉस कर लेता है, बट बोन्स को नहीं कर पाता. हमको बोन की इमेज हमको मिल जाती है वहां से, राइट? तो इसलिए एक्सरे इतना एनर्जेटिक होता है. तो सन से जो डायरेक्ट लाइट आ रही है हमको हमारी बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाती है. तो इतना एनर्जेटिक होता है. तो जीनन में क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? 28 ना, 28 या 18, राइट? तो 288 एक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, आर्गन का होता है. उसके बाद उससे पहले जीनन का होता है. तो 28 हो गया. हीलियम, ऑर्गन एंड जीनन. सो लास्ट वाला 8 होता है, राइट? तो आप निकालने से फुलफिल कर रहा है, राइट? सो इवन इफ इट इज अ फुलफिलिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज अ फिक्स. ना एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, ना एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हैं. लेकिन एनर्जी इतनी ज्यादा है हमारे पास, एक्सरे एनर्जी कितनी ज्यादा है, वो क्या करता है? बाहर के इलेक्ट्रॉन को भी नॉक कर देता है, उसको भी निकाल देता है. इन दैट वे कितनी एनर्जी से हम, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकला उससे हम एनर्जी मेजर कर लेते हैं. तो हमारे पास सोर्स से कितना एनर्जी आया, दैट वी कैन मेजर इट. अब पूछ सकते हैं बीच में क्वेश्चन. ओके, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन बिटवीन. इट्स इंटरेक्टिव वन. फाइन. तो ये इन सारे इंस्ट्रूमेंट से बन के हमने बनाया एस्ट्रोसैट, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट. तो दीज इंस्ट्रूमेंट्स मैं तो बताया, बाकी इंपॉर्टेंट
एक और इधर 2 इंस्ट्रूमेंट और है, SSM, इसका स्कैनिंग मॉनिटर, पूरे स्काई को स्कैन करता है। 3 है, 1, 2 एंड 3। दिस इज द 1 टेलीस्कोप। UV2 टेलीस्कोप। LAXPC 3 है, 1, 2 और एक यहाँ पे 3। और यहाँ पर हम प्रोपेलर लगा देते हैं उसके लिए, क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी लिंक, सोलर पैनल्स के लिए। नहीं तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी भी तो देनी है ना उनको, अपने आप तो करेंगे नहीं। सो ये मूव करते हैं ऑर्बिट में, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं सन के, अर्थ के चारों ओर, तो हम इनको मूव कराते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO। तो लो अर्थ ऑर्बिट मीन्स इट्स लेस देन 1000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सेंटर, फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड अर्थ सेंटर। ओके, सो इट्स लो अर्थ ऑर्बिट है, तो हम पता कर लेंगे कि कितनी एनर्जी हमको चाहिए इसको इस फील्ड में रखने के लिए। एंड दीज आर द डिफरेंट एटमॉस्फेयर्स। द ट्रोपोस्फेयर जहाँ ये होता है, जो हमारा लगभग इसके ऊपर ही जाता है सब, डिफरेंट अर्थ एटमॉस्फेयर्स हैं। दिस इज वेयर यू this region are where the satellites are somewhere here and somewhere asteroids, and यहाँ आपका plane चलता है। Okay, this is the concept, कैसे इसको स्काई में फिट करते हैं। Every action has a reaction, equal and opposite reaction। तो फंडामेंटल फिजिक्स लगाते हैं, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। एक्शन कहाँ दे रहे हैं? डाउनवर्ड्स दे रहे हैं। अब इतना एक्शन देते हैं कि रिएक्शन किसको ओवरकम कर जाए? ग्रेविटेशनल फोर्स को। अगर तो इतना आपके पास उसी तरीके से फ्यूल भरना पड़ेगा इसमें। आपके जो रॉकेट है, इसमें रॉकेट में हमने फ्यूल भरना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने अपना सैटेलाइट फिक्स कर दिया। ओके, so that's what it happens, action then reaction। You have to give the thrust, that is upward force, which has to overcome the gravity। अर्थ की ग्रेविटी को करना चाहिए ऊपर, जितना मास होगा मल्टीप्लाइड बाय g, that is अर्थ ग्रेविटी, आपने उसको ओवरकम करना है। so that's the simple way। अब हमें किस ऑर्बिट पे जाना है? Yes, this real one is this one by the Astrosat। ओके, ये आपका एस्ट्रोसैट आपका लॉन्च हो रहा है। इट्स ऑन द 20th September 2015। So I couldn't visit this place because unluckily I was on the bed because of my one of the severe accident। So it is on 20th September। of its life। So after that it will be as a junk in the sky, and it has the capability to observe from UV to X-ray, optical to X-ray। It's the fourth observatory, fourth in the world to establish the study. So India is the fourth position in the world to establish such observatory. Before that, US, Russia, and Japan. So after that, we have established such observatory, which is doing in the multi-wavelength observations. Okay. So coming to that, let's coming to individual part here। बोर होने बता देना, I can leave it। Okay, have you read the telescopes? Optics पढ़ा ना 12th में? कौन सी क्लास डाल दूंगी? 11th and 12th। So CBSE board, right? Okay, my daughter is on the ICSE board, so I can tell you that she is reading the optics। Okay, optics कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी, लेंस पढ़े होंगे, मिरर्स पढ़े होंगे, राइट? लेंस का काम क्या होता है? क्या करेगा लेंस? कभी सोचा वो स्फेरिकली क्यों होता है? सोचिएगा इसको। See, to become a good scientist, you need to think about everything around you। हर एक चीज के बारे में सोचना अपने आसपास की चीजें। लेंस को हम स्फेरिकल की जगह, कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स या कुछ और बना दे तो क्या होगा? अगर थोड़ा मोटा बना दें उसका सेंटर पार्ट और थोड़ा पतला कर दें उसका सेंट्रल पार्ट, कर सकते हैं। जब पतला कर सकते हैं मोटा भी कर सकते हैं, तो क्या होगा? So the work of the lens just to see the smaller thing as a bigger। अगर दो लेंस को हम यूज कर लेंगे तो क्या बनेगा? टेलीस्कोप बन जाएगा या माइक्रोस्कोप बन जाएगा?
ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लेंस यूज नहीं करते हैं इधर. So these are the normal telescope when you will go to the visit to the 14th year. These are the normal telescope that is called the UVIT, ultraviolet imaging telescope. वो भी जैसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमारे पास है यहाँ और देवस्थल में वैसे ही काम करती है. यहाँ 2 टेलीस्कोप हैं इसमें. इनका वेवलेंथ रेंज मैंने मिलीमीटर पे लिखा है क्योंकि I don't know that whether you will be able to know the micron and all these things. So मैंने छोड़ दिया उसको. तो मिलीमीटर में मैंने लिखा है, just look into that. 13 के आगे हमने 30 लगाए हैं, तो that millimeter, that small wavelength that we have to observe. Diameter जब मैं बात कर रहा हूँ तो diameter means this is the diameter which is 37.5 centimeter या 375 millimeter. Diameter मतलब ये diameter यहाँ से लेके यहाँ तक इस टेलीस्कोप का है. Then 14 centimeter is the secondary. Secondary भी है. टेलीस्कोप में कितना होता है, 2 कंपोनेंट होते हैं. कभी आपने वो आपके पास लेंस है नहीं, स्कूल से कभी प्रैक्टिकल में देख लीजिएगा. लैब तो होगी ना स्कूल में, होती है. लेंस तो देखा ही होगा आपने. तो हम अपने दिनों में जब हम बचपन में थे तो हम वो उससे क्या करते थे, कागज जलाते थे, कूड़ा भी जला लेते थे उससे. कैसे जलाते थे इसको पता? तो उस समय क्या निकलता पता आपको? अगर मैं सनलाइट की ओर करूं तो एक पॉइंट पर लाइट फोकस हो जाती है. तो दैट मीन्स इट्स फोकस है उसका, ये उसकी फोकल लेंथ है. क्योंकि सन से जितनी भी लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है. द लाइट पैरेलल टू द ऑप्टिक एक्स कन्वर्ज एट अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड, दैट्स व्हाट वी हैव डन. यहाँ भी हम वही करते हैं. मिरर की केस में भी वैसा ही होता है. जैसे कॉनकेव मिरर, ओके, इट्स अ स्फेरिकल वन. मैं डिटेल नहीं जाऊंगा. लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार व्हिच इज अस्यूम्ड टू बी द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, लेट्स से, फोकस में कन्वर्ज होगी. लेकिन ये तो वापस इसका एक ही ओर जा रही है, हमें रिफ्लेक्ट अपनी ओर करनी है. तो हम बीच में एक कॉनकेव लेंस यूज कर लेते हैं, मिरर यूज कर लेते हैं. वी ट्राई टू फोकस द लाइट समवेयर हियर. यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा. अब यहाँ पर इमेजर मतलब इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो सीसीडी अभी बोल रहे थे, चार्ज कपल डिवाइस. आपके कैमरा में भी होता है, पता ना, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें नॉइज बहुत ज्यादा होती है. हमारा जो कैमरा होता है, दैट कैमरा वर्क्स ऑन -110 डिग्री सेंटीग्रेड. उतना ठंडा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास थर्मल नॉइज आएगी, कहेगा तो हम कुछ भी कर दें उसको फिर तो. यहाँ पर हमने कैमरा रखा, तो यहाँ पर 2 टेलीस्कोप है यूविट. टेलीस्कोप नॉर्मली इस तरीके से काम करते हैं. यहाँ पर हमारा इमेज बन गया. परपेंडिकुलर रखना है इसके, नॉर्मल. आप घर में भी अपना टेलीस्कोप बना सकते हैं. यू कैन बाय, बहुत सस्ता मिलता है आजकल, 100-150 रुपये का लेंस मिल जाएगा, 2-3 लेंस मिल जाते हैं. बाय टू द मार्केट, इन एनी मार्केट, फुलवानी का मार्केट, नैनीताल का जो भी है, यू कैन बाय इट एंड यू मस्ट हैव अ ट्यूब. तो बहुत जगह मिल जाती है. यू मेक इट, विल एंजॉय इट. So you can have your first project like this, you can give them. Okay. This is the optical telescope, that is telescope in the UV range. Now coming to the soft X-ray telescope. नहीं, telescope in the X-ray. बहुत मुश्किल होता है X-ray में telescope बनाना. ऑप्टिकल टेलीस्कोप हमने क्या किया, सिंपल है. लेंस लिया, मिरर ले लिया, एक पॉइंट हमने कन्वर्ट कर लिया और इमेज कर लिया. इसमें भी हमारे पास कैमरा है. दिस इज द कैमरा. लेंस है, लेंस का काम फोकस करना है. इस पॉइंट पे फोकस कर लिया और हमने इमेज ले ली. सेम चीज हमने ऑप्टिकल में भी कर लिया. लेकिन एक्सरे टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है किसी को? पता है ना क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. तो वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से कितना बेंड होगा वो बताएगा. लेकिन वो किस पर डिपेंड कर रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मीडियम पर डिपेंड करता है. मीडियम मतलब क्या? नहीं, लाइट तो ट्रेवल कर रहा है, मटेरियल, मैटर, राइट. उस मैटर पे भी डिपेंड करेगा. तो इसके मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैटर पे भी डिपेंड करेगा. अब लाइट की वेवलेंथ क्या, उस पर भी डिपेंड करता है. वेवलेंथ लैम्डा पे भी डिपेंड करता है. अगर
Excuse me, sir, we cannot hear you. Okay, now you are able to hear me, Naik? Yes, sir. Thank you, Hello? sir. Yes, sir, we Thank can you. hear Thank you. you very much. Thank you. Thanks for noticing. Thank you. Yeah. I hope you are enjoying the things. Okay, fine. So you have a two set of the mirrors. One is placed in this way, one is placed on the hyperbolic, one is placed on the parabolic, and incident light on the smaller angle that we call the grazing incidence. In case of the optical, you are putting in the perpendicular incidence so that you can focus it at a point. In case of the X-ray, we are putting in incidenting in the grazing incidence, the smaller angle. That I just removed the rest of the part, I made something like that. So if the grazing incidence, it will incident at around 1 degree. दूसरे वाले मिरर में भी कितना होना चाहिए 1 डिग्री पे रिफ्लेक्ट में, देन वी कैन फोकस इट. अगर हम एक ही में करेंगे इट विल फोकस समवेयर हियर. हमें फोकल लेंथ भी तो कम करनी है ना, ये तो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, हम मैनेज ही नहीं कर पाएंगे उसको टेलीस्कोप को. सो दिस इज अ फोकल पॉइंट. और ये एक है कॉल इट द काइट व्यू. चंद्रा स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एक चंद्रा स्पेस ऑब्जर्वेटरी बाय द नासा and the honor of the Chandrasekhar Subramanian, who is a Nobel laureate of 1993. उसका इमेज है. देखो इस तरीके से हम नेस्टिंग भी करते हैं. देन इस तरीके मिरर, ये हमारी टेलीस्कोप है एक्सरे की. यहाँ से लाइट इंसिडेंट रिफ्लेक्ट, यहाँ पर अगेन फिर हम सीसीडी यूज करते हैं इधर. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरे टेलीस्कोप काम करती है. लेकिन ये एक्सरे टेलीस्कोप तभी तक काम की, मैंने क्या कहा, वेवलेंथ किस में डिपेंड कर रहे हैं, एनर्जी पे, यानी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, राइट. अगर वेवलेंथ और कम हो जाए 1 एंगस्ट्रॉम से, तो फिर क्या होगा, समस्या और बढ़ जाएगी. ये इंसिडेंस हमको और घटाना पड़ेगा, वो संभव नहीं है. 1 डिग्री तो बहुत होता है, 1 डिग्री में तो फिर भी कर ले रहे हैं. तो 1 डिग्री, लेस देन 1 डिग्री गेटिंग द इंसिडेंस इज वेरी टफ. सो हार्ड एक्सरे यानी गामा रे के लिए तो हम कर ही नहीं सकते. गामा रे को हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं. This is the difference between the optical and X-ray telescope. Normal incidence, incidence at a small angle that we call the grazing incidence, 1 degree. इतना बोर तो क्लास में भी नहीं होता ना पढ़ाते हुए. तो anyway, but if you are bored, then you tell me that. I can stop it, okay? I can take it here. You can take any questions now. I can take the questions. कोई दिमाग में आ रहा हो ऐसा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. राइट, समझ में आया? मतलब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो समझ में आया या तो बिल्कुल भी नहीं आया. तो आई विल एक्सपेक्ट कि सेकंड वाला ऑप्शन नहीं आया. ओके, एनीवे, आई ट्राई टू कन्विंस यू दैट कि नहीं ऐसा होता है. तीसरा जो मैंने बताया था लैक्स पीसी, लार्ज एरिया जीनोम प्रोपोर्शनल काउंटर, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, मैं इसको आपको बताऊंगा नहीं. ओके, अदरवाइज आप कहोगे कि बोर कर दिया पूरा, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है. ओके, द अदर वन इज कैडमियम जिंक टेलुराइड. ये सब गामा रे में, यानी हम हार्ड एक्सरे कहते हैं, मतलब एक्सरे दैट इज बियॉन्ड 1 केबी, तभी उसमें करते हैं, दैट इज टुवर्ड्स द गामा रे ऑब्जर्व करते हैं. सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप सॉफ्ट एक्सरे में करती है, और लेस देन 0.01 एंगस्ट्रॉम से नीचे जाते हैं. अब एज आई टोल्ड यू द जीनोन हमने इसमें भरा है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है इधर. ओके, उसमें हम एक वोल्टेज दे देते हैं. एक्सरे आती है, जीनोन को क्या करेगा, एक्सरे में एनर्जी इतना ज्यादा है वो उसको आयनाइज कर देता है, जीनोन को भी आयनाइज कर देता है, जबकि स्टेबल स्ट्रक्चर है, इसलिए जीनोन यूज करते हैं. उसको आयनाइज करता है, जहां पर आयनाइज करेगा वहां से भी इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर भागेगा, एनोड की ओर या कैथोड की ओर. एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड मींस निगेटिवली चार्ज. तो कहाँ की ओर भागेगा वो, एनोड की तरफ भागेगा. तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा उतना हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे. इस तरीके से हम एक्सरे मेजर कर लेते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट वे. ओके, आगे एज ए होल एस्ट्रोसेट इस तरीके से लुकेगा.
and will revolving around the sky. So anything about the astrosat? Astrosat is the satellite that observe. अभी रिसेंटली हमने एक और सैटेलाइट लॉन्च किया लास्ट दिसंबर में, दिसंबर 23 पे, वो भी है एस्ट्रोनॉमी के लिए। हम उससे पोलराइजेशन मेजर कर रहे हैं एक्सरे में। ऑप्टिकल में पोलराइजेशन मेजर करते हैं इधर, लेकिन एक्सरे में पोलराइजेशन मेजर करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा। आई होप कि मैं आपको कन्विंस कर सकूं कि आप थोड़ा बहुत साइंस पढ़ेंगे आगे की ओर, कैरियर बनाएंगे, नहीं तो फाइन, राइट। Why to study? What to study in the sky? टेलीस्कोप तो बना दे, सब कुछ बना दे, बताया भी मैंने क्यों बनाना है। कहीं ना कहीं जरूरत है ना। जूते चप्पल बनाए हमने, हमें दर्द हो रहा था इसलिए हमने जूते चप्पल की डिस्कवर किया गया, राइट। इसलिए हमें आसमान को पढ़ना है, यूनिवर्स को पढ़ना है, हम कहाँ से आए हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। That's what you started it here. So these are the few goals of this astrosat. Stars, एक आपने प्रीवियस उसमें देखा था, एकदम फ्लेयर आते हुए एकदम स्टार देखा, सन की इमेज देखी थी ना। स्टार भी ऐसा ही करते हैं, सन भी स्टार है, स्टार भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन कैसे मेजर कर रहे हैं उनको, दिखते तो है नहीं, वैसे भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जो भी मिलता है उसका खाना हमको फोटोन मिलता है। बस फोटोन मतलब जो भी लाइट आती है उससे। So you have to observe from the photon, we have to extract from the photons only. Massive star that, I'll come to that. Exoplanet आजकल बहुत चलता, सुना है? एक टॉपिक खूब घूमता रहता, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स, मतलब क्या हम अकेले हैं इस अर्थ में? एक अकेला मतलब मैं अकेला नहीं, हम, कोई भी और भी है, दैट इज अनदर थिंग, ओके। देन नोवे, सुपरनोवे, स्टार जब ब्लास्ट करता है तो सुपरनोवा बनता है। नोवा भी इसी तरीके से एक होता है। स्टार पैदा भी होता है, अपना लाइफ जीवित करता है, और मरता भी है। ये साइकिल चलता रहता है। यानी स्टार के केस में पुनर्जन्म पॉसिबल है, हमारे केस में पता नहीं, ओके। तो पुनर्जन्म इन दैट अनदर वे अराउंड, तो हो सकता है हमारे केस में ना हो। कॉम्पैक्ट स्टार मतलब जो स्टार मर जाता है, जो सुपरनोवा हो जाता है, बाहर का मटेरियल तो बाहर फेंक जाता है, अंदर कॉम्पैक्ट बच जाता है, वो श्रिंक करता रहता है। जितना श्रिंक करेगा क्या होगा? मास तो उतना ही, लेकिन श्रिंक कर रहा है, क्या बढ़ेगा? ग्रेविटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ रही है? रेडियस कम हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, आ रहा है, आ रहा है। मास वही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो डेंसिटी क्या हो गई? डेंसिटी कम हो गई तो क्या हो गया? कॉम्पैक्ट हो गया, कठोर हो गया, जिसमें कील भी नहीं ठोक सकते, ओके। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट। वो है ये ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट डॉट। अब ये तीन बला क्या है? ब्लैक होल तो अभी सुबह पढ़ाया था उधर, तो ऐसा होल जिससे लाइट ही नहीं आती है। न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन डिजेनरेशन, न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें। व्हाइट डॉट बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिजेनरेशन होती है। ये डिपेंड करता है इसका, इनका इनिशियल मास क्या था। ब्लैक होल का जो स्टार होगा जिससे ब्लैक होल बना, उसका मास लगभग मोर देन 10 to 10 सोलर मास और मोर देन दैट था। 2 to 8 सोलर मास वाले, सन के मास वाले स्टार आपके न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, फिर उससे छोटे व्हाइट डॉट बन जाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट गैलेक्सीज हम उससे करते हैं, इसका फॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ कैसे स्टार फॉर्म हो रहे हैं, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है, और इसमें वेरी हाई एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट्स भी पढ़ लेते हैं। दीज वी कॉल, फॉर एग्जांपल GRBs, AGNs, सुपरनोवे एंड ऑल। कोशिश करते हैं समझने की, समझ जाएंगे तो ठीक। हाँ, पहले एक यूनिवर्स नाम का चैप्टर होता था CBSE की बुक पे, अभी है नहीं है? मैंने एक साल पढ़ाया भी, इसको मुझे याद है, लॉन्ग बैक, around 26, 27 years ago. Okay, I'll come to that. Here now the first one, the stars, active stars जो हम बोल रहे थे, वो सन जैसे स्टार्स होते हैं, इनमें इस तरह से डार्क होल होते हैं, that we call the sun spot, here you call the star spot. And this is the massive star. जब स्टार बहुत ज्यादा होता है, बताया ना, सन के स्टार के अंदर क्या होता है? एनर्जी जनरेशन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियर बम फटते रहते हैं। तो दीज न्यूक्लियर, इतने न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, तो मास से इतना रेडिएशन आता है कि रेडिएशन से क्या होता है, बाहर वाला मटेरियल ही निकालना शुरू कर देता है। ग्रेविटी इसको सस्टेन नहीं कर पाती है।
इस केस में ग्रेविटी सस्टेन कर ले रही है थोड़ा बहुत। अगर मैं कंपेयर करूं सन और, ये सन है और ये स्टार मैसिव स्टार, ये डिफरेंस है लगभग जितने ना। व्हेन यू गो बैक सुयाल बॉडी में स्काई बहुत अच्छा दिखता है, या इवन देन भीम भवाली एज वेल, दिस वेयर द सैनिक स्कूल इज देयर टुवर्ड्स द मंदिर। नाउ गो टुडे outside from your room, look into the sky and notice, what did you notice there? You will see the different colors of the stars. एक कलर नहीं मिलेगा। कलर मतलब क्या होता है? What does the color tells? That tells temperature. Okay, basically it tells the temperature. If you see in the sky, you will see, मैंने खाली नहीं, the sun is a blue, sun is a yellow star. This is a blue star. You will see the blue star, yellow star, red star in the sky. 3 स्टार तो आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो 3 स्टार अगर आप क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे, दैट मींस यू हैव अ 3 टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन द स्काई। इतना तो क्लियर हो गया। ये आज रात का ऑब्जर्वेशन से अगर इसका सही है तो ओके, प्रॉमिस मी, फाइन। You will see this observation, you will see the different colors of the stars. These colors of the stars are, first observation tells you have a different temperature. तो आपने टेम्परेचर कर लिया। टेम्परेचर कैसे निकालें आपको पता तो चल गया। क्लास 12 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है नहीं है ना? विंस लॉ है, विंस लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना? बीएससी में पढ़ते थे, भूल गया, सॉरी। एनीवे, बट वहां से हम निकाल सकते थे। टेम्परेचर निकालना, ये सब चीज करना हम कर सकते हैं। ब्लू टेम्परेचर, ब्लू है दैट मींस टेम्परेचर इज, स्टार इज हॉट, येलो स्टार इज लेसर हॉट, एंड रेड इज स्टार इज कूल। कूल मींस 3000 डिग्री सरफेस टेम्परेचर है। ब्लू मींस अराउंड मोर देन 20,000 डिग्री। येलो मींस 6,000 डिग्री। रफली इज दिस ओके। These are some interesting images that is taken by the AstroSat. This is a UV image गैलेक्सी का। कोई ये गैलेक्सी जिसमें हमारी ऐसी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी भी ऐसी है। This is the similar to the galaxy and this is a part of the supernova. Supernova मतलब मैंने कहा कि स्टार क्या होता है, किसी कभी क्या होता है, अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है मतलब रेडिएशन आ रहा है अंदर से। तो इसके मतलब रेडिएशन फोर्स भी तो देगा, पुश भी तो करेगा ना बाहर की ओर। लेकिन उसको ग्रेविटी क्या करती है, बैलेंस करती है। कुछ हद तक तो ग्रेविटी बैलेंस करती है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बम फट जाते हैं उधर, उस केस में ग्रेविटी नहीं ओवरकम कर पाती उसको, देन ब्लास्ट हो जाता है। तो दैट ब्लास्ट इज द सुपरनोवा। वो तो जब हुआ तब हुआ, लेकिन उसका एक रिमनेंट है। ओके, दिस इज अ सिमुलेशन नॉट ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन रियल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ऐसा हमारा सोचना है ऐसा हो रहा होगा उधर। मैंने कहा ना, स्टार तो सिंगल पॉइंट दिखता है, सिंगल पॉइंट से तो ये हम नहीं निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ फोटोन दिखे, डिफरेंट तरह के फोटोन दिखे, देन हमने मेजर किया कि कैसा हो सकता है। देखो एक स्टार है, जो स्टार फॉर्म भी हो रहा है और बीच में सेंटर पे एक स्टार है, ये रिंग है चारों स्टार की। यहाँ पर जो होता है अचानक एक बस्ट होता है, देखिए आप, स्मॉल स्मॉल बस्ट हो रहे हैं। अभी इतना बड़ा बस्ट होता है कि पूरा का ब्राइट कर देता है उसको हम कहते हैं फ्लेयर। तो सन में भी ऐसी फ्लेयर्स होती है। पिछली बार अभी रिसेंटली न्यूज पे था कि कैसा हो गया था कि आपको ऑरोरा दिखने लग गया था, काफी तेज हो गया आपका। इससे क्या होता है, आपका हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी डैमेज हो जाता है। ओके, तो हम इसको कैसे देखते हैं। नाउ आई विल जस्ट कम टू नेक्स्ट वन, नो सॉरी प्रीवियस वन। या you just look into, oh sorry, या वो इधर चल रहा है, इधर डिलेज है, हो गया मेरा, almost हो गया। this I'm just showing them this is, so how will you do it? This is 13-day continuous observations by another thing. अगर आप केयरफुली देखेंगे इसकी ब्राइटनेस, जैसे स्टार है ना, इसकी ब्राइटनेस आपको चेंज होती हुई दिखेगी। बहुत सारे स्टार्स की देखिए, आप इसको देखिएगा, इसमें देखिएगा
लुक एट इट, इसको आपने में देखा एकदम ब्राइट हुआ था, इस तरीके से स्टार स्काई में ब्राइट होते रहते हैं। तो ये चीजें हम एस्ट्रोसेट से ऑब्जर्व करते हैं, और वो हमारा प्रीवियस जो पहली वाली स्लाइड दिखाई थी, हमारा इमेजिनेशन था कि ऐसा हो रहा होगा उधर। ओके, दिस इज अनदर स्टार, एक न्यूट्रॉन स्टार था जो चारों ओर मास सेक्रेट करता है, और दिस इज अ सुपरनोवा कैसे होता है, ब्लास्ट होता है, सेल से आपका एक्सपेंशन होता है। ये सब चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, सिंपल फोटॉन्स हमने कहा कि जैसे बताया टेलीस्कोप सिर्फ फोटोन करेगा, हम जो देख सकते हैं, ये हमारा इमेजिनेशन है कि हम ऐसा हो रहा होगा उधर। सो कन्वर्जन ऑफ दिस टू दिस, इफ यू गो बैक यू थिंक दैट क्या हो रहा है, मैंने एक एग्जांपल बताया, यू गो टू दिस नाइट, अपने कमरे से बाहर आई, हॉस्टल में रहते हैं ना सभी लोग, यू कम आउटसाइड फ्रॉम योर हॉस्टल, अलाउ मैडम प्लीज, ओके, एंड सी इन द स्काई, आसमान पे देखिए आप डिफरेंट कलर के स्टार देखेंगे, मैंने बताया 3 कलर तो आपको दिखेंगे, रेड, ब्लू एंड येलो कलर। मैंने बताया टेम्परेचर आप बताइए उनका, आप जब आज से आसमान पे देखेंगे रेड कलर बताएंगे तो टेम्परेचर इस रेंज पे होगा, येलो इस रेंज पे, ब्लू होगा तो इस रेंज पे होगा। ओके, so I'll stop it here. Thank you very much. Thank you, Jeevan ji, for this wonderful talk. Now we have time for some questions. पहले क्लास के स्टूडेंट्स को चांस देंगे। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, you can either type in chat or you can ask your questions. Keep your questions ready. We'll take them in a few minutes. पहले यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, अभी जो टॉपिक I said that whether you have understand fully or you haven't understand anything. I assume the second option. So let's ask the question. Suit me. You know that is suit क्वेश्चन me. से गोली से नहीं, मेरे को क्वेश्चन पूछो बहुत सारा। कुछ भी क्वेश्चन। आप यहाँ पर आए हैं तो आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, राइट? तो आपको ये कुछ शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि मुझे ये नहीं पता। आपको हिंदी में पूछना है हिंदी में पूछिए, इंग्लिश में पूछना है इंग्लिश में पूछिए। जीवन जी दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने क्लास 12 हिंदी मीडियम से पढ़ा है। सर हाँ वो बताइए। जो हमारा एस्ट्रो सेट था हाँ, उसमें एक जिनॉन जो हमारा लेक्स पीसी, लार्ज एरिया जिनॉन प्रोपोर्शनल काउंटर। हाँ सर, तो उसमें जो जिनॉन है वो आपने बोला एक नोबल गैस है, लेकिन हाँ। एक केस होता है कि जिनॉन फ्लोरीन के संग रिएक्ट करता है, इफ आई एम नॉट एग्जैक्टली ना, मैंने जो बताया नहीं था, देन यू कॉट इट मी, क्लैप फॉर यू एक्चुअली। इसमें हम मीथेन डालते हैं, CH4 डालते हैं, क्योंकि हमें जिनन एक बार हम क्या हो जाएगा हमारा जब रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मुझे उसे इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर रहा है मैं वहां, अब उसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, अब ना नॉकआउट कर रहा, तो इसलिए हम उसमें मीथेन डालते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए, फिर वो अपने आप जिनोन बनाएगा रिएक्शन से। तो हम क्या करते हैं, फ्लोरीन को ना डाल के इधर हम क्या करते हैं, मीथेन को डालते हैं। मीथेन डालने से क्या होगा, हमारा लॉन्ग लाइफ रहेगी इसकी। आई हैवंट इंक्लूडेड दिस, मैं समझा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट यू आस्क्ड द क्वेश्चन, थैंक यू, गॉट द पॉइंट। होता है। थैंक यू सर। अर्चन, अक्षिता, ग्रेट। और कोई क्वेश्चन? अरे यार No इतना question. खराब पढ़ाया मैंने। याशिका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं पूछ दो मुझसे, चलो वही बता देता हूँ। अब बॉयज तो और एकदम ही इनर्ट गैस हो गए हैं। No, they were interacting. Some of them are the interactive. Yeah, I was asking, then they were answering. स्टिकर चाहिए तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हाँ, yes. लो स्टिकर दो भाई। सर हम कहते हैं कि सर ये प्लेनेट में इस गैस से बना हुआ है, या फिर ये कोई और ऑब्जेक्ट जो सोलर ऑब्जेक्ट है वो इस चीज से बनी हुई, तो हमें पता कैसे चलता है कि ये किस चीजों से बनी हुई? ग्रेट। हम लोग क्या करते हैं, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मतलब हमने स्पेक्ट्रम दिखाया ना मैंने, अब हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल रेंज में ही हम स्पेक्ट्रा को डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे, स्पेक्ट्रा कैसे होता है, डिफरेंट कलर्स में कैसे करते हैं, विवग्योर पढ़ा है?
हाँ तो वहीं से चलते हैं, वहीं जो स्टार्ट इज फ्रॉम दियर ओनली। लाइट आया, विवग्योर यानी 7 कलर्स में आया, अगर व्हाइट लाइट आया तो 7 कलर्स में होगी, जो भी लाइट आएगी वहां से, स्टार से तो डिफरेंट लाइट्स आती है ना, कहीं से रेड स्टार से रेड लाइट आएगी तो हो सकता है विवग्योर में आपका वी और मिलेगा ही नहीं, नीचे वाला ब्लू वाला मिलेगा ही नहीं अगर उसको लेंस के थ्रू पास करोगे तो, सॉरी प्रिज्म के थ्रू पास करोगे तो। हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम लेते हैं। अब स्पेक्ट्रम में ये देखते हैं कि कौन सा वेवलेंथ हमको मिल रहा है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या हुआ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइट अलोंग द वेवलेंथ। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसको तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अभी मैंने बोला अगर मैं इस क्लास का स्पेक्ट्रम बोलूं तो क्या कहूंगा, 9 to 12th, या एज में स्पेक्ट्रम बोलूं तो व्हाट विल यू से, लेट्स से 14 to 16, ये स्पेक्ट्रम हो गया। अब वहां मैं वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में लाइट को बांट देता हूं तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। अब एलिमेंट कैसे पता चलते हैं उधर, सबसे मैं स्पेक्ट्रम लूंगा। अब स्पेक्ट्रम बोर मॉडल पढ़ा है किसी ने, बोर मॉडल पढ़ा है ना, तो बोर मॉडल में हाइड्रोजन अल्फा लाइन कितने एंगस्ट्रॉम में आती है, और कहां से कहां आती है, जब n2 to n1 होता है ना, 1/r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होता है ना, यही होता है, वो भूल गया, हो सकता है मुझे करेक्ट करना। तो बोर मॉडल में एच अल्फा लाइन कहां से, हाइड्रोजन बामर लाइन बोलते हैं ना इसको, बामर पास्चन ब्रैकेट फन, राइट। तो बामर लाइन में एच अल्फा लाइन एच अल्फा में इसलिए कर रहा हूं कि ऑप्टिकल रीजन में आती है, 6563 एंगस्ट्रॉम पर आती है। अब मुझे 6563 एंगस्ट्रॉम में एब्जॉर्प्शन मिलता है, यानी लाइट तो कहां से आ रही है, पीछे से आ रही है, स्टार से आ रही है, आगे मेरे पास क्या है, मटेरियल है, वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा ना, तो 6563 वाली लाइन को एब्जॉर्ब कर देगा। तो स्पेक्ट्रम में वहां पर हमें एब्जॉर्प्शन मिलेगा, क्या पता चलेगा उससे, मेरे पास हाइड्रोजन तो है भैया उधर। इसी तरीके से हीलियम का पता चलेगा, लिथियम है तो लिथियम का, बेरिलियम है तो बेरिलियम का। इन दिस वे वी आर एबल टू नो द किससे बना हुआ है। समझ में आए, और समझाओ, आई कैन एक्सप्लेन इट, ठीक है। स्पेक्ट्रम लेते हैं, हाँ जी सर बताइए, बैठ के यार, हमारे यहाँ खड़े नहीं होते हैं। हाँ हाँ, किसकी लाइट से, स्टार इतने दूर है ना, मैं यहाँ पे हमको इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है, हमसे 650 किलोमीटर ऊपर ही है, नहीं हार्डली मैटर, इट इज एन इफेक्ट, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। एक मैंने इवेंट बताई थी आपको, गामा रे बर्स्ट, अगर वो हमारे अर्थ में हो गया, सॉरी हमारे ये गैलेक्सी में हो गया इन वेन, उसकी एनर्जी आती है 10⁻54 अर्ग्स पर सेकंड। अर्ग्स यू नो दैट एनर्जी की यूनिट होती है ना, मतलब 10⁻54 अर्ग मतलब बहुत ज्यादा है, राइट। सन से एनर्जी आती है 10⁻33 अर्ग पर सेकंड। एक सेकंड में जब इतनी एनर्जी आ जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। तब वो तभी हो सकता है जब क्लोज बाय कोई स्टार में आपका सुपरनोवा हो गया या बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई, ओके। तो अदरवाइज वो इफेक्ट नहीं करता है। हाँ इफेक्ट कौन करता है, इफेक्ट सन करता है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट इफेक्ट सन कर देगा, सन से कहते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल। हम किस में फ्लोट कर रहे हैं, वी आर फ्लोटिंग ऑन द प्लाज्मा। अभी भी पूरा आयंस में फ्लोट कर रहे हैं, अर्थ भी आयंस में फ्लोट कर रही है पूरी, ओके। अब गैसेस स्टेट तो उतना है नहीं, हमारा लिक्विड गैस सॉलिड तो कुछ है ही नहीं, 1% होगा कुछ नहीं, 99% प्लाज्मा। तो प्लाज्मा स्टेट मतलब स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, हम वी आर फ्लोट कर, तो वो इफेक्ट करता है। सन में फ्लेयर्स होती है, वो इफेक्ट करेगा, उसके लिए हमें सील्ड बनाया रहता है, सन सील्ड रहता है सैटेलाइट पे, सन से हम उसको सील्ड करते हैं। और दूसरा कभी इस तरीके से एनर्जेटिक इवेंट्स हो जाती हैं तो हम तुरंत शट ऑफ करते हैं सैटेलाइट को इमीडिएटली। मैंने बोला था पार्टिकल मेजरमेंट करने के लिए आता हुआ, इसमें एक हम लगाते हैं पार्टिकल मेजर करने के लिए, तो उसको वो सेंस करता है कि इतना ज्यादा एनर्जी आ रही है, आपके कॉस्मिक रेज इतनी ज्यादा आ रही है, नाउ यू नीड टू शट इट डाउन। तो हम सैटेलाइट को शट डाउन कर देते हैं केस, अब ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्स और गैलेक्सी जितने भी हैं वो बहुत दूर हैं, इसलिए हमसे उस पर बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं आती है। इतनी एनर्जी आती है तो फिर विल बी हैप्पी एक्चुअली, कि हमारे पास इतने फोटोन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, कि हम तो फोटोन के भूखे हैं, राइट। वी नीड अ फोटॉन्स टू डू सम न्यू फिजिक्स। वहां
इतना फोटोन नहीं आता है, इसलिए हमारे पास हम कितना एक्सपोजर देते हैं पता है? ये कितना एक्सपोजर लेते हैं इसमें हम लोग? मैक्सिमम 30 सेकेंड ले सकते हैं। तो अगर आपने कभी ट्राई किया है तो रात को आप ले लीजिएगा इससे आज, अगर आपके पास है तो। अलाउ नहीं होगा, सॉरी। इसमें 30 सेकेंड्स ले सकते हैं। अगर हम यहाँ ले तो हम 1-1 घंटे का भी एक्सपोजर लेते हैं, तब जाके हमें कुछ दिखता है उधर। यू आर एबल टू सी सम फ्यू फोटोन, ठीक है। तो इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो सैटेलाइट को डैमेज करे। सैटेलाइट डैमेज कर सकता है, सोलर रेडिएशन कुछ करते हैं। देयर आर सम रीजन वी कॉल द साउथ अटलांटिक अनोमली। उस रीजन पर अगर सैटेलाइट जाते हैं, वहाँ ज्यादा पार्टिकल स्प्लिट करते हैं, उस रीजन पर जाता है, उस रीजन में सैटेलाइट को शट डाउन कर देते हैं। ये होता है, ठीक है। हाँ, जो हमारे ऊपर ब्लास्ट होते हैं स्टार या सन में, उनका हमारे सैटेलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है? या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग टू यू। जो हमारे जैसे जो फ्लेयर होता है ना, ब्लास्ट मतलब फ्लेयर होता है सन पे। अगर स्टार के केस में हो रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा डिटेक्टर को ओवर एक्सपोज करेगा, थोड़ा इश्यू आ जाएगा, डिटेक्टर में इश्यू आ जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं आता है। अगर सन के केस में ऐसा हो रहा है, अगर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी के पार्टिकल्स आ गए हमारी तरफ की ओर, टुवर्ड्स द सैटेलाइट की तरफ आने भी चाहिए वो, अगर आ रहे हैं तो उस केस में सैटेलाइट को हम बंद कर देते हैं। वो हमको पता चल जाता है, हमारे पास ऑलरेडी सेंसर्स लगे रहते हैं उसमें, कि हमें ज्यादा एनर्जी आ रही है, अब सैटेलाइट को बंद कर दो। वो प्रोटेक्शन है। एस्ट्रोसेट, हाँ, एस्ट्रोसेट करता है यूवी मतलब आपका 1300 एंगस्ट्रॉम टू एक्सरे, हार्ड एक्सरे करता है। हार्ड एक्सरे यू कॉल इट 100 keV। इफ यू कॉल द 100 keV दैट इज 0.0001 एंगस्ट्रॉम, 0.301 एंगस्ट्रॉम, इतना तक ये रेंज है पूरी। सर वो आपने बताया कि हम मिल्की वे में ही हैं, तो हम अपने आसपास की सराउंडिंग्स नहीं देख सकते हैं। तो जो हमारे पास मिल्की वे की पिक्चर्स हैं या फिर जो कहाँ से आई है, कहाँ से आई है? सारी सब हाइपोथेसिस है या फिर Hypothesis है। कैलकुलेशंस, ऑब्जर्वेशन? हमने डिफरेंट पार्ट ऑब्जर्व किए क्या है मिल्की वे के, डिफरेंट पार्ट मिल्की वे के ऑब्जर्व करने। सेंटर है हमारे पास, मिल्की वे का सेंटर है। मिल्की वे के सेंटर में हमारे पास हम कहते हैं ब्लैक होल है, ताकि हम उसके चारों ओर मूव कर सकें। वो तो हम सेंटर तो हम देख सकते हैं, और डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। और बाकी थ्रू द ऑब्जर्वेशन हमने मिल्की वे को कंस्ट्रक्ट किया है कि ऐसी होगी, ओके। और बाकी जितना गैलेक्सीज के ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, गैलेक्सी डिफरेंट टाइप की गैलेक्सीज होती हैं, उसमें से एक टाइप की गैलेक्सी मिल्की वे भी होगी। जब 100 गैलेक्सी 3 तरीके की हैं, 2 तरीके की हैं, स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सीज है, उसमें से एक गैलेक्सी हमारी भी। हालांकि ये व्यूइंग एंगल है, आपको कैसा दिखना है, स्पाइरल दिखना है या इलिप्टिकल। अगर स्पाइरल को मैं ऐसे देखूं, स्पाइरल हम ऐसे तो आपको इलिप्टिकल दिखेगा, अगर मैं ऐसे करूं तो आपको स्पाइरल दिख जाएगा। वो व्यूइंग एंगल के कैसे हमारी तरफ लोकेटेड है। तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है उसको, कि हम कैसे उसको हमारी गैलेक्सी कैसी दिखती होगी। ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट वो हम कर सकते हैं। हाँ, एक सेकेंड, इससे पहले वाले पॉइंट के लिए एक माइनर एडिशन हाँ। मैं करना चाहूंगा। हाँ। अभी जैसे आप इस रूम के अंदर बैठे हुए हैं, अब ये बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखाई देती है आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, राइट? आप पर्दे हटाइए, विंडो से बाहर देखिए, आपको दूसरी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, दूसरे घर दिखाई देंगे, ठीक है? आप फीचर्स मैच कीजिए कि यहाँ पे आपको डोर दिख रहा है, यहाँ विंडो दिख रहा है, बाहर के घरों में भी जो वहां पे भी डोर है, विंडो है, यहाँ पे अगर आपको स्लोपिंग रूफ दिखाई दे रही है अंदर से, बाहर के घरों पे भी स्लोपिंग रूफ है, तो आपके घर का अगर आप बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये आप एक इस हिंट्स को यूज करके एक आर्टिस्ट कंसेप्शन बना सकते हैं, एक रेंडरिंग बना सकते हैं, जो कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मिल्की वे गैलेक्सी कैसी होगी। तो यही चीज मिल्की वे के केस में की गई है, और वही इट्स लाइक दैट इफ यू कैन इमेजिन योर बैक, एग्जैक्टली राइट। अब सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं इसको कि क्या हो सकता है हमारे, बाय लुकिंग द अदर्स। एक तो ये है, दूसरा एक एक पार्ट, जैसे हमने कहा, मैंने कहा ना 2 आर्म हमको दिखती है गैलेक्सी की, हम 2 आर्म ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं उसको। जाइएगा अभी, दिस इज ऑल्सो इन अक्टूबर, स्काई विल बी क्लियर, लुक इनटू द स्काई, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ना ईस्ट टू वेस्ट आता है। अक्टूबर वाला वो ओरायन नाम इतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा, हाँ, नेक्स्ट फिर भी आता है। समर वाला जो है बहुत वो बढ़िया बहुत दिखता है आपको, अच्छा समर में 2 आर्म आपको दिखते हैं। आप देखिएगा स्काई का और फोटो दे लीजिएगा उसको, ठीक है। तो 2 ऑब्जर्वेशंस आपके पास हैं। पहला ऑब्जर्वेशन,
आज देखिएगा, अगर स्काई साफ होता है तो कितने तरह के स्टार दिखते हैं आपको स्काई में, तो क्या आप मेकआउट कर सकते हैं उसको, और उसका टेम्परेचर निकालिएगा। ठीक है, टेम्परेचर मतलब सिंपल वे में कैसे निकालना, ब्लू होगा तो कैसा होगा, रेड होगा तो कैसा होगा, येलो होगा तो कैसा होगा। ओके सर हाँ जी। सर, जैसे जुपिटर में डस्ट स्टॉर्म चल रहे हैं, उनकी एज भी हमें गिवन रहती है कि इतने ईयर से चल रहे होंगे सर, तो ये एज कैसे फाइंड की होगी? कैसे find की भाई? जुपिटर के केस में पर्टिकुलरली ये कि इतने टाइम से चल रहा है स्टॉर्म, वो मेनली जो ग्रेट रेड स्पॉट है उसके केस में किया Yeah. गया है। ठीक है, और ग्रेट रेड स्पॉट का जो ऑब्जर्वेशन है, जब पहले लोग यूरोप में जब विजुअल एस्ट्रोनॉमी करते थे आंखों से देख के, बिकॉज उस टाइम पे जो लोग फेमस होना चाहते थे वो कॉमेट ढूंढते थे या प्लैनेट्स वगैरह सर्च करते थे, इस तरह की चीज़ों पे काम करते थे। तो ऐसे रिकॉर्ड्स में है कि मतलब वहाँ पे इस तरीके का कुछ फीचर है। तो इतने टाइम से उन्होंने देखा हुआ है, तब के रिकॉर्ड्स हैं कि मतलब तब से ये फीचर जुपिटर के ऊपर है और अभी भी हम उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इसलिए कभी भी ग्रेट रेड स्पॉट की परफेक्ट एज आपको नहीं मिलेगी कहीं पे। हमेशा हर जगह पे ये लिखा होगा कि ये 300-400 सालों से भी ज्यादा टाइम से चल रहा है, क्योंकि उतने पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, और अगर कुछ फ्रेश वगैरह साइक्लोन या ऐसे कुछ अगर फीचर्स डेवलप होते हैं तब तो रेगुलरली ऑब्जर्वेशन हो ही रहे हैं, वो फिर पता चल जाता कुछ है। चीजें न्यूमेरिकल सिमुलेशन के थ्रू में पता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इतना फास्ट रोटेट कर रहा है, और उसके ऊपर ऐसे स्पॉट कैसे बनेगा। यू कैन इमेजिन इट, बहुत सारी साइंस लगा के आप इमेजिन कर सकते हैं इतना, तो उससे हम एज निकाल सकते हैं। इस थ्योरेटिकल मॉडलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं उसको। जैसे हमारे केस में, इवन सन के केस में हम लोगों के पास इस अराउंड 115 ईयर्स ओल्ड ना, दैट इज कोडाईकनाल 125 ईयर्स। 125 ईयर्स हमारे डायरेक्टर उसमें काम करते हैं। 125 ईयर्स ओल्ड डेटा हमारे पास, 125 साल पुराना डेटा हमारे पास, और सन का ऑब्जर्वेशन 1600 ईस्वी से हो रहा है, 1600 ईस्वी से लोग कर रहे हैं, और तब से डेटा पड़ा हुआ है। और तब से डेटा इवन हर साल मैं देखता हूँ कि नया पेपर आता है, नया रिजल्ट आता है, नया थिंग एक्सप्लेनेशन होती है जब भी नया आता है, क्योंकि वो इट कैन नॉट बी वेल एस्टेब्लिश्ड। ओके यस गो अहेड। सर हम मून पे भी टेलीस्कोप लगा सकते हैं? प्लान तो है, यस कैन डू दैट, बट अभी तो बहुत असंभव है। बट यू आर प्लानिंग इवन देन, क्या कहते हैं ना, इंटरफेरेंस पढ़ा है आप लोगों ने? इंटरफेरोमेट्री करते हैं हम लोग। इंटरफेरोमेट्री कैसे करेंगे? आई डोंट नो, आई कैन एक्सप्लेन इट आउट, बट हम दो टेलीस्कोप, एक अर्थ पे एक मून पर रखते हैं, तो बेस लाइन बहुत लंबी हो जाती है, टेलीस्कोप की साइज इतना बड़ा हो गया। तो रेडियो टेलीस्कोप लगाने का प्लान अभी इंडिया ने किया है, लेकिन अभी स्टार्टिंग स्टेज, लेकिन अभी तो विक्रम लैंडर हुआ 23 अगस्त आज, इसलिए मना रहे हैं। अभी वहाँ टेलीस्कोप लगाना अभी इतना आसान नहीं होगा, अभी तो मुश्किल लगता है, बट वी कैन प्लान, यू कैन थिंक ऑफ, यस प्लीज। सॉरी एक क्या बोला? आर्गन यूज करते थे, लेकिन आर्गन उतना नहीं। आर्गन का क्या था, दैट इज लाइफ टाइम इज लेस एक्चुअली देन द जीनोम, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। आर्गन यूज कर सकते थे, लेकिन बाकी यूज करेंगे तो बाकी आयनाइज रहती है ना। हाँ, हीलियम जल्दी आयनाइज हो जाएगी आपकी, तो हमें एक स्टेबल चीज चाहिए था कि हम जीनन ही क्यों कर रहे हैं, दैट इज आर्गन का करेंगे तो इस लेस स्टेबल, और उसके ऊपर करेंगे तो मोर एनर्जी चाहिए। तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं कि हमें क्या क्या करना है, तो इसलिए जीनन सूटेबल पाया, और जीनन मीथेन के साथ मिलके आपका चेन रिएक्शन बना के सस्टेन भी करता है लॉन्ग टाइम के, इसलिए हम जीनन को यूज करते हैं। सर यस हमें सर। सर हमें कैसे पता चलता है कि कोई स्टार ब्लैक होल में खत्म होगा, व्हाइट ड्वार्फ में, या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा खत्म होने के बाद? बेसिक कंसेप्ट है मास, इसका मास कितना है। अगर सन के जैसा मास है तो व्हाइट ड्वार्फ होगा, 2 to 8 टाइम्स मास होगा तो आपका न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, अगर उससे ज्यादा मास हो तो ब्लैक होल होगा। कंसेप्ट है मास पे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास। सर हम अलग अलग मिल्की वेज को मल्टी यूनिवर्स बोल सकते हैं क्या? नहीं, मल्टी यूनिवर्स तो एक ही है ना अभी तक तो। मल्टी यूनिवर्स नहीं होता? मिल्की वेज आर डिफरेंट, दे आर इन द सेम यूनिवर्स। तो यूनिवर्स इज इस क्वेश्चन का आंसर हम जब आगे का सेशन करेंगे तब देंगे। ऑलरेडी हम इस सेशन, इस पार्ट के लिए थोड़ा सा ओवर टाइम है, और अभी घोड़ाखाल स्कूल का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी अभी बाकी है। तो नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस फ्रॉम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल।
Guys, if you are still around and if you are interested in asking any more questions, please unmute or raise your hands or either type in chat. Let me just. Scenic School, are you still around? It could be lunch break. Okay. Sorry for I see some people, someone has unmuted. Yeah, please go ahead. Sir, I am Yeah. Arnab Sharma from Science School Ghodakhal. My question is that what is SSLV that was recently launched by ISRO? SSLV. launch vehicle. It's one of the launch vehicles. It's a launch vehicle. So depending upon where your you goals and payload capacity, there are different types of launch vehicles. launchers like GSLV, Mark II, Mark III, with certain improvements. So PSLV, so SSLV is I think for the small satellites. Small satellites, and Yeah. for So example, it's more PSLV efficient. PSLV is for the polar, and GSLV for the geosynchronous. So it's like, I mean, if you Launch want to like bring two people from one point to another point, you are not going to bring a bus, right? So you're not going to use a GSLV for very small satellites. Yeah, It's more efficient if yeah. you use SSLV. I already showed you that the launch vehicle, what is the use of the launch vehicle. For example, small satellite and low Earth orbit, you can use these vehicles. Yeah. Are there any more questions from Scenic School? Good afternoon, sir. I am Malang Sethi from Scenic School Ghodakhal. Sir, can you please explain in detail about neutron stars and their formation? Yeah, can we explain neutron star and the formation when the star's mass is quite high? So the formation of the all these compact objects more or less similar. What happens that at the core there is an energy generation by the nuclear fusion reaction, that is conversion of the hydrogen to helium, helium to heavier nucleus. When it converts hydrogen to helium, that is 25% of hydrogen is finished there, then helium burning starts. In that case, what happens? The outer mass of the stars will be exploded, makes something like this supernova and all, and it goes to the interstellar medium, and only the core will remain there. If the core is there, then there is no nuclear reaction is going at that time, so it tried to shrink. तो किससे करेगा? ग्रेविटी से श्रिंक करना, क्योंकि अब सस्टेन नहीं होगा तो ग्रेविटी श्रिंक करेगी. Now the mass is so high, so there is a degeneracy of the neutron. You call the neutron star. Okay. So that's what the neutron star or other compact objects forms. Okay, because we are short of time, maybe one last question from Scenic School. If not, then we'll close it. Thank you, sir. No more questions. Okay, thank you, guys, for joining us in this session. Yeah. Now we come to the end of the two talks. I again thank Dr. Jeevan Pandeyji for joining us and giving this wonderful overview of AstroSat mission. And so we are already over time. We have arranged for some tea and snacks. Scenic School guys, we would be stopping the session over here because I know that we can't send the stickers online. So what I'll do is that when I visit the school next time after monsoon for a talk or some telescope session, I'll be bringing the stickers then. And I'm also sending the link of the videos that will be playing over here to Joshi sir. And he can screen those videos for you in the classroom because otherwise online playing, there will be a delay and probably you'll not be able to enjoy it as much. So thanks again for joining us. We'll be closing the session over here. Okay, and now let us break for tea outside. Thank you. And Thank you very much, sir, for calling us in the meeting. Thank you. तो जब आप लोग बाहर चाय ले रहे होंगे, there are some very simple posters, but हो सकता है आपके वो कुछ concepts clear कर दें. ये एस्ट्रोनॉमी के ऊपर और हमारे कुछ फैसिलिटीज के ऊपर हैं. देखिए, अगर आपको इंटरेस्ट लगता है तो आप वो देख सकते हैं, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स भी कंडक्ट करेंगे, एक ऑन द स्पॉट क्विज, और हो सकता है आपको कुछ प्राइजेस मिले उसमें.
नरेंद्र जी, सेशन क्लोज कर दें। एंड कर दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग भी स्टॉप कर दीजिए, लाइव स्ट्रीमिंग दोबारा नहीं करना है। बताइए।